The topic which we are going to talk about today is reticuloendothelial system or monocyte macrophage system. As you must have done in the previous class, what is the leukopoiesis, how the WBCs are being generated. In today's class, the learning objectives includes that you should be able to understand the main components of the reticuloendothelial system. You should be knowing what are the basic functions of the reticuloendothelial system, the importance of reticuloendothelial system. The name reticuloendothelial system and monocyte macrophage system is being used alternatively for one another. It is not necessarily when we are talking about reticuloendothelial system, we are not talking about monocyte macrophage system. It depends upon a little classification difference where the endothelial systems are being taken off of the latest classification. So they are now known as the monocyte macrophage systems. We'll be talking about this in a bit. What basically the monocyte macrophage system or the reticuloendothelium system is. This is also known as the monocyte macrophage systems or reticuloendothelial system. They are widely separated parts of the cell body or the human body. They are available there. And what they have in common is the property of phagocytosis. I know you people have not done the phagocytosis portion yet to come in the next classes. But what is the phagocytosis? This is the property of engulfing a foreign body or a cellular debris or the worn out substance which is present in the body, and to engulf it and then to destroy it. This is the ability of monocyte and macrophages. The cells, they engulf, they destroy the bacteria or the viruses or other foreign substances, and they ingest worn out or abnormal body cells. Who has discovered this? This was discovered by the German pathologist whose name was Karl Albert Ludwig Eschoff, and he was introducing the term of reticuloendothelial system in the year of 1924. It's not important to remember the name of the scientist, but you should be knowing what it made a difference, which has made this reticular endothelial system change to monocyte macrophage system. So because of the phagocytic activity of the macrophages and the monocytes, they were known as the reticuloendothelial system, but later it was reclassified and few of the endothelial cells and the fibroblast cells were excluded from this classification, and now they are being named as mononuclear phagocytes. So what are the components of the monocyte macrophage system? The total combination of the monocytes, mobile macrophages, fixed tissue macrophages, a few of the specialized endothelial cells in the and the lymph nodes is known as reticuloendothelial system. I am repeating once again, ये चार चीजें आपको चाहिए. एक मोनोसाइट चाहिए, दूसरे आपको मोबाइल मैक्रोफेजेस चाहिए, देन आपको फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस चाहिए एंड स्पेशलाइज्ड एंडोथेलियल सेल्स चाहिए. कहाँ के बेटा? दे शुड बी प्रेजेंट इन बोन मैरो, दे आर द स्प्लेनिक एंडोथेलियल सेल्स, and they are present in the lymph nodes. That's why this is completely known as the reticuloendothelial system. What are monocytes actually? They are the largest class of leukocytes, and they are making up 2 to 8% of total leukocytes in the blood. कहाँ से बनते हैं? ये आपके बोन मैरो से आ रहे हैं या टिश्यू में से आ रहे हैं बेटा? They are coming from the bone marrow. And what are macrophages made up of? The macrophages are made up of these monocytes. So we could say that monocytes are the precursors of the macrophages. Okay? First आपका क्या बन रहा है? Largest cell variety कौन सी है? These are monocytes. People who have queries or who have any issues, they would be sorted out at the end of the class. Why you people are raising your hands?
So monocyte make up the largest variety of the leukocyte. कितने परसेंट होता है? 2 to 8% होता है. भाई क्या मसला है? Unmute and tell me what is the issue. Why you are raising your hands? जी बेटा. Any issues? The people who are raising their hands, would you please tell me why are you raising your hands? You have specific queries, or you are just raising your hands for attendance? Two 117. I should go slower. What further slower? It is very slow. Macrophage system or the reticuloendothelial system is consisting of monocytes, the mobile macrophages, the fixed macrophages, and the endothelial cells. कौन से endothelial cells बेटा? In the bone marrow, in the spleen, in the lymph nodes. They are all known as reticuloendothelial system. First, we would be talking about monocytes. लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आपकी ल्यूकोसाइट्स की. सुबह वाली क्लास में आपको पता चल गया होगा, ल्यूकोसाइटोसिस आपने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा सेल्स जो जनरेट होते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं. और उसके बाद आपके मैक्रोफेजेस जो हैं वो कहीं से ऊपर से उड़ के नहीं आएंगे. दीज आर मोनोसाइट्स आर द प्रीकर्सर्स ऑफ द मैक्रोफेजेस. दे मेक अप दीज मैक्रोफेजेस. और ये इसकी जो चेंज होती है, दिस इज नॉट अकरिंग इन द ब्लड. This is occurring when these cells are leaving the blood and they are entering the tissues. मोनोसाइट्स हैं जब तक वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं. जैसे ही वो किसी टिश्यू में एंटर हो जाएंगे, they would be having enhanced phagocytic activity, and they would be known as macrophages. If they are fixed at a particular tissue, they are known as fixed macrophages. And if they are mobile and doing the phagocytic activity throughout the tissue surfaces, then they are known as the mobile macrophages. कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा ये? दे आर प्रेजेंट इन एल्व्यूलर फैगोसाइट्स, वो जो आपके लंग टिश्यूज में होंगे. अगर लिवर में होंगे तो हम उसको कहेंगे कप्फर सेल्स. अगर कनेक्टिव टिश्यूज में होंगे तो वी वुड बी कॉलिंग देम एज हिस्टियोसाइट्स. अगर ये ब्रेन में होंगे तो वी वुड बी कॉलिंग देम एज माइक्रोग्लियल सेल्स. टिश्यूज, skin tissues, connective tissues, then what we'll be calling them? Histiocytes. ब्रेन में हैं नर्वस टिश्यूज हैं आपके माइक्रोग्लियल सेल्स. लिवर में हैं कप्फर सेल्स हो जाएगा इसका नाम. अगर ये आपके इसमें लंग्स में हैं तो वी वुड बी कॉलिंग देम एज अल्व्यूलर फैगोसाइट्स. The reticuloendothelial system, they are consisting of the cells which are descending from the monocytes. I have already told you this. And they are able to perform the function of phagocytosis of foreign material and that of particles. 90% of the reticuloendothelial cell system is located in liver. कौन से particular cells का नाम क्या होगा बेटा? Kupffer cells. ठीक है? The most important function of reticuloendothelial system is phagocytosis, but they also takes part in cytotoxicity against tumor cells. And they also participate in the regulation of the immune system. They remove the immune complexes from the circulation in healthy persons and is formed of phagocytic cells that are found in the circulation and in the tissues. Here is the diagrammatic representation. आपके हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं. एक आपके पास हो जाएगा लिम्फोइड प्रीकर्सर, एक आपका हो जाएंगे माइलॉइड प्रीकर्सर. माइलॉइड प्रीकर्सर बोन मैरो में है और जब ये आपके ब्लड में सेल जनरेट करेगा तो वी वुड बी कॉलिंग इट एज मोनोसाइट. ओके, वंस दिस मोनोसाइट
enters. Once these monocyte enters the tissues, they would be known as either they are interstitial dendritic cells, either they are macrophages, either they are microglial cells. अगर nerve tissues में हैं तो microglial cells होंगे, अगर interstitial spaces में हैं तो they would be known as the interstitial dendritic cells. तो आपको इसका precursor कौन है macrophage का? Precursor macrophage का आपके हैं myeloid precursor, और वो माइलॉइड प्रीकर्सर जो है वो जनरेट करेगा आपका मोनोसाइट. मोनोसाइट गिव राइज टू द मैक्रोफेजेस. इट इज नॉट पॉसिबल सिंपली कि आप डायरेक्टली मैक्रोफेज अटेंड कर लें. माइलॉइड प्रीकर्सर आपको देगा मोनोसाइट एंड मोनोसाइट विल बी गिविंग यू द मैक्रोफेजेस. So a generalized phagocytic system is located in all the tissues, especially in those tissues which have large quantities of particles and toxins and other unwanted substances which has to be destroyed. Endothelial cells जो होते हैं आपके वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जो भी पर्टिकुलर मटेरियल आ जाता है, अगर वो टॉक्सिन है, अगर वो साइटोटॉक्सिक है, either through the blood or through the tissues, this is being removed continuously. कहाँ से कैसे कौन रिमूव करेगा? Because of the phagocytic activity of monocyte and macrophages, और इसलिए हम इसको कहते हैं monocyte macrophage system, and also it is also known as the reticuloendothelial system. जो आपका phagocytic activity है वो आपके एंडोथेलियल सेल्स में भी हो सकती है, वो आपके सेल जो हैं जो जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम द बोन मैरो उनसे भी हो सकती है. लुक एट दिस पिक्चर हियर, यू कैन सी कि दिस इज समथिंग रेटिकुलर सेल्स ऑफ द स्प्लीन एंड द नोड्स एंड द बोन मैरो. ये कहाँ से आ रहे हैं आपके? दिस इज जनरेटिंग फ्रॉम द बोन मैरो. स्टेम सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके बोन मैरो से आ रहे हैं. जबकि आपके टिश्यूज या एंडोथेलियल ओरिजिन की कौन सी चीज है यहाँ पे? दिस इज माइक्रोग्लिया जो आपके ब्रेन सेल्स में प्रोड्यूस होती है. ये बीटा सेल्स हैं आपके, ये आपके ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं. तो द थिंग्स, द एंडोथेलियल सेल्स, ये आपके अगेन फिक्स्ड सेल्स हैं जो आपके एंडोथेलियल जो लाइनिंग है आपकी वेसल्स की वो प्रोवाइड करेगी. तो दिस थिंग इज नॉट डेफिनेट कि आपका phagocytic एक्टिविटी किस वजह से हो रहा है. phagocytic एक्टिविटी could be merely a responsibility of the monocyte macrophages, and the endothelial cells would only participate. It is not completely responsible for all of the phagocytic activity. It is only responsible for a part being played in the phagocytic activity. The inner lining of the blood vessels about the precursor cells, that is hemopoietic stem cell, will give rise to the myeloid precursor, which would give rise to the monocyte, and it would give rise to the macrophage system. We could alternatively use the names of reticuloendothelial system and monocyte macrophages system for all this happening, the phagocytic activity which takes place under the influence of the monocyte macrophage system. Because in the recent advances, few of the endothelial cells and fibroblast cells have been excluded, so the reticular endothelial cell system is now substituted with the name of monocyte macrophage lineage. So going ahead, where are the macrophages present, the fixed macrophages or the mobile macrophages, and what are their activities, how they perform at their particular site? Monocyte tissue macrophages, they are entering into the tissues and they become macrophages. If they are present in the lungs, they are known as alveolar macrophages. If they are present in the bone, they are known as osteoclast cells. If they are present in the connective tissue, they are histiocytes. If they are present in the liver, they are known as the Kupffer cells. In the brain and the spinal cord, they are known as microglia. If they are present in the intestine, then they are known as the intestinal macrophages.
So first thing which you'll get to have from the bone marrow would be the precursor cells, and then we have the monocytes which would migrate into the tissues and they become macrophages. Lung macrophages, alveolar macrophages, these names will be continuously used again and again. Then you need to understand कि histiocytes skin में होते हैं बेटा, Kupffer cells liver में होते हैं, and microglia cells are the macrophages which are present in the brain and the spinal cord. The tissue macrophages, which are present in the skin and the subcutaneous tissues, which are known as histiocytes. When the infections begins in the subcutaneous tissue and local inflammation occurs, the local tissue macrophages, they divide and they form more and more macrophages. Usually, the skin is the protective layer where infection cannot directly attack upon the connective tissue or the subconnective tissue. But what happens whenever there is torn in the skin surface, whenever there is a cut, whenever the uniformity of the skin is lost, then this is easy access for the infections and the infectious agents to get an access to the subcutaneous tissue. The local macrophages system which is present there is the histiocytes. They would be having more multiplication and would be able to defend the body against the infecting bacteria or the viruses. The macrophages which are present in the lymph nodes. If the particles are not destroyed locally into the tissues, what is happening? The lymph will take it to the respective lymph nodes. जो axillary lymph nodes में चले जाएंगे, कुछ supraclavicular में चले जाएंगे if this is from the thorax. ये जो drainage होगा lymph का towards the lymph nodes which is located intermittently along the course of the lymph flow will cause a meshwork of the sinuses, जहाँ पे आपके जो bacteria होंगे और जहाँ पे आपके जो this dangerous substances हैं जो आपके ये inflammation करवाने के लिए bacteria आ रहे हैं या viruses आ रहे हैं, they get trapped there into the meshwork of the sinuses. वो एक जाल बना हुआ है lymph nodes का, वहाँ पे जाके वो फंस जाते हैं, and where we have already present with the enough of the macrophages which would help them, which will help to destroy this invading agents. ठीक है, या आपके लोकल टिश्यू में आपकी स्किन प्रोटेक्ट करे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. देन अगर ये लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाएं बाय मींस ऑफ लिम्फ जो ड्रेन करती है इमीडिएट एरियाज को, तो लिम्फ नोड्स में क्या है, मैशवर्क ऑफ नेटवर्क है, वहां पे वो उसको इंट्रैप करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. एंड फ्रॉम देयर दे वुड बी, वो कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगेन इट विल बी देन एक्ट ऑफ द मैक्रोफेजेस विच वुड बी एक्टिंग on the incoming invaders. Either they are bacteria, either they are viruses, and they get rid of those injurious agents. Tissue macrophages in the Kupffer cells, that is in the liver. If the particles are not destroyed locally in the tissues, they enter the lymph flow and the lymph nodes, and the foreign particles are then trapped in these nodes and the meshwork of the sinuses which are lined by the tissue macrophages. This is the diagram of a lymph node. Alveolar macrophages in the lungs. Another route, as we are breathing all the time, so this is the major route where infections or the invading organisms can enter the body. Large number of tissue macrophages, they are present in the integral components of the alveolar walls. They can be phagocyting particles and they can be entrapped here. अब ऐसा होता है कि जो लोग जैसे इफ दे आर स्मोकिंग, तो उसके लिए इंट्रैपमेंट कहाँ पे होती है, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर entrapped in the upper respiratory tract, some are entrapped in the lower respiratory tract, and the major particles are being entrapped in the bronchi and bronchial spaces. ठीक है, जो आगे जाके उसको डैमेज करते रहते हैं. तो ये जो इन्फिल्ट्रेशंस हैं, जहाँ तक वो उसके मैक्रोफेजेस आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, वो उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन then they form a limiting membrane around it, like
ट्यूबरकुलस जो है ट्यूबरकुलम बैक्टीरिया है वो आपका अगर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, उसने आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया है, तो इफ इट इज नॉट एबल टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, व्हाट दे विल बी डू, दे वुड बी फॉर्मिंग अ बाउंड्री और द लिमिटिंग मेम्ब्रेन अराउंड दिस ऑर्गेनिज्म, और वो आपको एक्सरेज पे भी नजर आते हैं कि दिस इज अ स्पेसिफिक फोकाई ऑफ द ट्यूबरक्यूल बेसिलाई। वो आपको मिल जाता है टीबी का स्पेसिफिक बेसिलाई का एक फोकाई मिल जाता है कि हाँ जी यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था, मैक्रोफेजेस ने इस पे काम किया है, इसको अपनी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड रखने के लिए लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाई है। So if the particles are digestible, the macrophages can digest them and release the digestive products in the lymph. If the particles are not digestible, the macrophages form a giant cell capsule, or we can also call it as a limiting membrane, along the particle until such time that they can be easily dissolved. Such capsules are frequently formed around tuberculosis bacilli, the silica, the dust particles and the carbon particles. ठीक है, या आप डायरेक्टली उसको फेगोसाइटाइज कर जाएगा अगर डाइजेस्टेबल होंगे। अगर नहीं कर सके एल्वुलर मैक्रोफेज उसको डाइजेस्ट, तो उसके सराउंडिंग में एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाएंगे या आपका एक जाइंट सेल कैप्सूल बनाएंगे। यूजुअली कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में दिस लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज फाउंड? दिस इज सिलिकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, डस्ट पार्टिकल्स एंड इन स्मोकर्स। इन सारे लोगों में आपको उनके चेस्ट एक्सरे पे एक लिमिटिंग नेक्रोटिक लीजन मिलेगा जो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि यस, दिस ऑर्गेनिज्म और दिस infectious agent is being worked upon by the macrophages and they have encapsulated it to a certain extent and this is not further digestible. That's why this is being limited to this particular place. The macrophages, the Kupffer cells in the liver sinusoids. दूसरा मेन एरिया जो आपके रूट है for the ingestion of the bacteria or for the ingestion of the infection or the injurious substances is through your GIT. Large number of the bacteria from the ingested food material passes through the GIT and then they enter the portal of the blood. वो जगह जहाँ पे मेजर ऑफ द टॉक्सिन्स आपके डिटॉक्सिफाई होते हैं, दे आर बीइंग वर्कड अपॉन बाय, दे आर बीइंग एब्सॉर्ब्ड एंड दे आर बीइंग डाइजेस्टेड इज आपका liver cells or liver sinusoids. So before the blood enters the general circulation, it passes through the liver sinusoids and which is lined by the tissue macrophages, which is known as Kupffer cells. They form an effective filtration barrier and almost none of the bacteria from the GIT can pass from the portal blood into the general systemic circulation. Phagocytosis by Kupffer cells of a single bacteria occurs in less than 1/100 of a सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका बहुत इफेक्टिव मैनर है आपका लिवर साइनोसाइट्स का टू गेट रिड ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ऐसा बहुत कम होगा कि आपका फूड विच इज बीइंग इंजेस्टेड फ्रॉम माउथ एंड इट एंटर्स इनटू द ब्लड एंड आफ्टर इट हैज पास्ड थ्रू द लिवर from the Kupffer cell macrophages system, it gets destroyed. Usually it gets destroyed and it does not get access into the circulation again, and it is done in a very small fraction of time, that is 1/100 of a second, portion of a second. Kupffer cell lining of the liver sinusoids. Macrophages of the spleen and the bone marrow. Both the tissues, either they are macrophages, they are being entrapped in the reticular meshwork of these two organs. कहाँ पे होता है? आपका red pulp में and venous sinuses में. ये दोनों जगहें आपकी lined हैं with the macrophages में. ठीक है? And the red pulp is an exceptional means of phagocytosis. Foreign particles, unwanted debris in the blood, including old and abnormal red cells, वो उसमें आके entrap हो जाते हैं and phagocytize हो जाते हैं. Spleen
वो भी लिम्फ नोड्स की तरह काम करती है, लेकिन ब्लड और लिम्फ में फ़र्क होता है कि वो टिश्यू प्लेसेस ऑफ द स्प्लीन में से पास होगा और ब्लड आपके रेड पल्प से पास होगा. The macrophages of the spleen engulf bacteria and other infectious agents. The cells of the spleen react against infection by formation of antibodies, and there is 25% of the T cells and 15% of the B lymphocytes. Then if we come to the fixed macrophages, तो fixed macrophages में सबसे पहले आ जाते हैं आपके endothelial cells. फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस में आपके आ जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स. कौन से एंडोथेलियल सेल्स होते हैं? जो इनर लाइनिंग होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स की. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फिक्स्ड जो एंडोथेलियल सेल्स में आपकी टिश्यू लाइनिंग है और द ब्लड वेसल लाइनिंग है, आई एम सॉरी, द ब्लड वेसल जो लाइनिंग है वो यूजुअली काम करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डायस के लिए. वो स्पेसिफिकली खुद कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकती in the phagocytic activity, but when the macrophages or the monocytes have an access through that particular area आपके blood vessels में से गुजरेंगे तो उसको facilitate endothelial vessel जरूर करती है. The reticular cells, the main supporting or the stromal cells of the lymphoid organ, they would also have this phagocytic activity, and वो आपके जो collagen like reticular fibers हैं उसकी help से वो आपके defense में काम करते हैं. The osteoclast cells, large multinucleate macrophages होते हैं, वो आपके bone की reabsorbing में और reshaping में काम करते हैं. तो जब भी आपका एंडोथेलियल सेल्स का नाम आएगा तो यू वुड बी हैविंग दीज फ्यू नेम्स दैट आर द एंडोथेलियल सेल्स वन, then you would be having the reticular cells, then you would be having the osteoclast cells, then you would be having the dendritic cells. All these contribute for the formation for the defense against the invading bacteria or the viruses or the injurious agents, and they would be working combinedly for the protection of the body tissues against infection. So this was all about today. We have talked about के components कौन-कौन से हैं reticuloendothelial system के. You know that this is monocyte, this is macrophages, either they are mobile macrophages, either they are fixed macrophages, and the endothelial tissues or the endothelial cells. Okay. फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस है इसका फंक्शन, प्रिवेंशन है अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट दिस इंजूरियस एजेंट्स के, उसमें काम करता है. इंपॉर्टेंस क्या है? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम or the monocyte macrophage system, the body is unable to combat with the incoming invaders, incoming infections, or incoming injurious agents. So this is basically because of this that the local process of the inflammation is taking place. आप आगे जाके पढ़ेंगे in the next classes chemotaxis and all. तो जो inflammation में process involve होता है, again you would be having the basic need of these macrophages to come and attack and engulf the incoming bacteria. So this all is done under the influence of the monocyte macrophages system.